part, I am going to discuss about the agenda for a national education. What is the agenda for a national education? About that one, I discuss here. Students, everyone you know, the peoples who lived in our country, that means the Indians, like much more than a Western education, which education system was introduced in our country by that Britishers. So all Indians in our country, they thought that a Western education, they made Indians civilized person. That's why they much more like that a Western education in our country, India. Students, you know, in early of the 19th century, all that Indians like that a Western education, and you know, in that a Western education, they thought that education helps to modernize our Indians, and they also urged the British to open more school, college and university and spend more money on education. हमारा कंट्री का जो पीपल है वो लोग जो ब्रिटिशर्स को जो स्प्रेड हुआ था हमारा कंट्री में इंग्लिश एजुकेशन that Western persons which they introduce in our country, they like that one much more, and also they insist them that you open huge large number of school college in our country and they modernize our Indians. They also insist that the persons, but some persons in our country who like our education system, they did not fall in that education system which were introduced by in our country that a Western persons. And students, you know that education system you find Western education system did not like the Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore, that two persons are much more react against that Western education. हमारा कंट्री का जो महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर ये जो एजुकेशन सिस्टम है उसको टोटल सपोर्ट नहीं कर रहे थे. व्हाट where they react about that one, I discuss now in front of you. So English education enslaved us. How that English education enslaved us, about that one I discuss here. Students, you know Mahatma Gandhi, that person who is known as the father of our nation, he did not like that Western education. He thought that Western education, that a colonial education create a sense of inferiority in the mind of the Indians. अगर इंग्लिश एजुकेशन हमारा कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ है, अगर वो वेस्टर्न एजुकेशन कॉलोनियल एजुकेशन हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इंडियंस का जो माइंड है इंडियन का तरफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेगा. दैट्स व्हाई ही डिड नॉट लाइक दैट एजुकेशन. एंड यू नो दोज एजुकेटेड इजी इन दिस इंस्टीट्यूशन बिगन एडमायरिंग द ब्रिटिश रूल. जो लोग एजुकेट होना चाहते थे दैट इंग्लिश एजुकेशन को पसंद करते थे, वो लोग ब्रिटिश रूल को भी पसंद करते हैं. एंड इंडियंस दैट ए पर्सन्स दैट ब्रिटिशर्स थॉट through that education we modernize our Indians, but total against Mahatma Gandhi of that education. वो education system को महात्मा गांधी total against में थे, वो उसको support नहीं कर रहे थे. And you know that Gandhiji want education system that would help Indian regain their sense of dignity and self-respect. महात्मा गांधी चाहते थे कि इंडियंस के पास ऐसे एजुकेशन हो जो कि उनका सेल्फ रेस्पेक्ट को वो रख पाएगा और उनका डिग्निटी को एनहांस करेगा. सच टाइप ऑफ एजुकेशन महात्मा गांधी वांट विदिन दैट इंडियंस. एंड यू नो ही फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेज और टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग एंड एजुकेशन इन इंग्लिश क्रिपल द इंडियंस. उनको अच्छी तरह पता है जो इंडियन का लैंग्वेज है एजुकेशन सिस्टम में वो इंडियंस को डेवलप कराएगा, लेकिन अगर इंग्लिश को आज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन इम्पार्टिंग किया जाता है टोटल दैट ए क्रिपल दैट ए इंडियंस. एंड यू नो द
distance from them of their own social surrounding and made them stranger in their own land. अगर वेस्टर्न एजुकेशन को इंडियन अपना लेते हैं तभी इंडियंस अपना जो सराउंडिंग है, अपना जो एनवायरनमेंट से वो लोग दूर हो जाएंगे, अपना कल्चर को वो लेफ्ट करेंगे. दैट्स व्हाई he did not like that a Western education. And you know that Gandhiji argued that English ought to be developed the person's mind and soul, but people must learn a craft, how to work with their hands, and they know how that different things operated. महात्मा गांधी एजुकेशन को अच्छी तरह उनको पता है कि एजुकेशन जो है हमारा ह्यूमन का माइंड को और ह्यूमन का सोल को डेवलप कराएगा. बट यू नो पीपल मस्ट लर्न. सब पर्सन्स जो है हमारा कंट्री का उन लोग पढ़ना चाहिए, बट सच टाइप ऑफ एजुकेशन दे लर्न व्हिच डेवलप देयर माइंड एंड देयर सोल, एंड सच टाइप ऑफ एजुकेशन दे टॉट. दैट मीन्स क्राफ्ट, art and craft that they taught, and a different type of that works, handwork things they taught in our school, which made them and educated and develop their in future. This would develop their mind and their capacity to understand. ऐसे एजुकेशन इम्पार्टिंग करना चाहिए इंडियन का बीच में जो कि उनका अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा. सो एज ए नेशनलिस्ट सेंटिमेंट स्प्रेड पीपुल बिगन थिंकिंग ए सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन. इसलिए वो हमारा इंडियंस को इंसिस्ट कर रहे थे, आज इंडियंस आप अपना कल्चर के बारे में सोचिए, आपका जो कल्चर है, आपका जो एजुकेशन सिस्टम को आप अपनाइए. दैट थॉट वी फाइंड इन द माइंड ऑफ दैट महात्मा गांधी. स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट टैगोर्स अबोर्ड ऑफ पीस. What is the experience of Tagore in their schooling time? I am going to discuss about that one, and also about that educational institution which was set up by that Rabindranath Tagore. Students, you know, in the year 1901, Tagore was established a educational institution in West Bengal. That education system is far away from Kolkata, 100 kilometer, and that education institution name is Shanti Niketan. About Shanti Niketan, I am going to discuss in front of you. Before that one, I am going to discuss about the schooling experience of that Rabindranath Tagore. Students, you know that Rabindranath Tagore, when he was a child, he had to go to school. He found it is suffocating and oppressive. जब टैगोर एक स्टूडेंट थे, स्कूल टाइम में वो कभी भी स्कूल को पसंद नहीं करते थे. वो सोचते थे स्कूल एक सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव सिस्टम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है. He thought that school is a jail. When teacher taught in the classroom at that time, his mind wandered here and there. He did not listen any single words, and he always his mind is moving here and there. And that classroom, he was also much more irritating for him. So that educational system he did not like, and Tagore's mind would always be moves away. The experience of Calcutta school day, he shaped Tagore's idea of education. On growing up, he wanted to set up a school where the child was happy. When Tagore was growing up, in his mind, he thought, I set up such type of educational institution where the environment is much more free and a creativity created in the mind of the children. So such type of education I have need. And after that, after his schooling, when he was grew up, he established such type of educational institution which gave child happy, where she could be free and creative, and where she was able to explore her own thought and desire. उसके बाद यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर बोले कि हम ऐसे एजुकेशनल सिस्टम, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे जहाँ पे बच्चा अपना जो डिजायर है लेके आगे बढ़ेगा, अपना जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस कर पाएगा, अपना जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ा पाएगा. सच टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आई सेटअप इन फ्यूचर, एंड his feeling also that come to true.
in the year 1901, Rabindranath Tagore that is set up educational institution. That educational institution gave the self-learning, and there also we did not find outside the rigid and restricting discipline of the schooling system he was set up. And Tagore was the view that the creative learning could be encouraged only within a natural environment. टैगोर फील किए कि क्रिएटिव लर्निंग स्टूडेंट के बीच में तभी ला पाएंगे जब भी उनके पास एक नेचुरल एनवायरनमेंट होगा. सो ही चूज दैट इज शांति निकेतन. एंड यू नो वी आर लिविंग इन द हार्मोनी विथ नेचर, जहाँ पे स्टूडेंट लिविंग करेंगे और रिलेशनशिप्स रहेगा नेचर के साथ. सच प्लेस ही चूज. चिल्ड्रेन को दैट कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी. ऐसे प्लेस को चूज किए जहाँ पे बच्चा अपना नेचुरल क्रिएटिविटी को डेवलप कर पाएंगे. दैट्स वाई इन द ईयर 1901 ही एस्टैब्लिश दैट इज शांति निकेतन. इन मेनी सेंस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इज सिमिलर वे. दोनों का जो थॉट था एजुकेशन सिस्टम का तरफ सिमिलर वे में था. एंड यू नो देयर वर हाउएवर डिफरेंसेस टू. Gandhiji was highly critical of Western civilization and its worship of machines and technology. महात्मा गांधी जैसे उन लोग का एजुकेशन सिस्टम और उन लोग का जो ट्रेडिंग सिस्टम को पसंद नहीं करते थे. टैगोर ऑल्सो he did not like that Western civilization and their teaching method, which teaching method they did in our country. You know, Tagore emphasized the need to teach science and technology at शांति निकेतन में वो इम्पोर्टेंट दे रहे थे ऐसा एजुकेशन को इम्पार्टिंग करने के लिए. which education system, which subjects are important for children. He emphasized that is science and technology at शांति निकेतन along with art, music and dance. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में म्यूजिक, आर्ट एंड डांस को भी सपोर्ट करते थे. ये सब्जेक्ट आज कंपलसरी वहाँ पे पढ़ाया जाता था. मैनी इंडिविजुअल्स एंड थिंकर्स वर थॉस थिंकिंग अबाउट द वे ऑफ नेशनल एजुकेशनल सिस्टम कुड बी फैशन. बहुत सारा हमारा कंट्री का लोग जो है ये जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को बहुत पसंद करते थे. वो लोग सोचते थे दैट इज ए फैशन. एंड यू नो सम वांटेड दैट इज चेंज विद इन द सिस्टम सेट अप बाय द ब्रिटिश. और कुछ लोग चाहते थे ब्रिटिश जो एजुकेशन सिस्टम हमारा कंट्री में इंट्रोड्यूस किए हैं उनको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको हमारा कंट्री से हटा देंगे. दैट सिस्टम दे डिड नॉट वांट. दे वांट टू चेंज दैट एजुकेशनल सिस्टम and they want that educational system which is established by that Rabindranath Tagore and Mahatma Gandhi's education system. And you know that true national education system both that person like in our country India. That is all about in this chapter.